into the shape while using your hands like to the fingers, right? So I'm going to take out. It's already blanched, right? Yes. It's already blanched. It's done. Chef, for how long do we blanch the potatoes? It's about 10 minutes. Boil too much. Then the color, right? It's not already blanched. Cooked. It's done, right? So it's Chef. like partially cooked. For how It's long? say about 75% or 80%, right? Put this one by one. I don't want to cook anymore to make it black because the breadcrumb is already reddish. I hope inside is cooked. And I'll make the sauce. So as I said, mayonnaise. Put a little mayonnaise, maybe 1 or 2 spoons like this. 5-6 pieces of capers, then gherkins. You have to chop the capers and the gherkins separately. And mix with this mayonnaise, lemon for the taste, and a piece of lettuce. I think it's cooked. Should be, it says the golden brown. Can you see something like golden? Yes. Yeah. Otherwise it will burn. So it's called the golden brown. I can easily even put just on the plate. You can do anything, even the dessert, not only for drinking purpose. I just put little tartar sauce on a plate. So then I add little ketchup in the middle of the tartar sauce, right? And do little decoration like this. The crumb fried fish with French fries and tartar sauce. So thank you very much. Learning. আমি আগে টার্টার সস বানিয়েছি বাসায়, কিন্তু ফিশ ফিঙ্গার এবং ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ট্রাই করিনি। আজকে উনি করে দেখিয়েছেন। আমি একটু নার্ভাস, কারণ আমি আগে কখনো এই ডিশটি ট্রাই করিনি। নাম শুনেছি, তবে কখনো ট্রাই করা হয়নি। তবে শেফ রাজবি আমাদের আজকে যেভাবে দেখিয়েছে, ইনশাল্লাহ ট্রাই করলে পারবো। তো থ্রি লিটল শেফস, আজকে তোমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে ডেমনস্ট্রেশনটা দেখেছো এবং শেফ মেন্ডিস এটা বানিয়েছে। আমরা আশা করছি যে তোমরা এক্স্যাক্টলি হাইয়েস্ট কোয়ালিটি দিয়ে এটাকে তৈরি করবে। বাট অবশ্যই এটা জানতে হবে যে এই রাউন্ডের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে। অবশ্যই আজকে এখান থেকে তোমরা কয়েকজন এলিমিনেটেড হবে। তো যেই বিষয়গুলো শেফ মেন্ডিস ফোকাস করেছে বা টাচ অন করেছে, এইগুলোর উপর গুরুত্ব দিতে হবে এবং মাস্ট ট্রাই ইউর বেস্ট। Yeah, of course. আমরা ডেমনস্ট্রেশনে অনেক কিছু অনেক বেসিক্স শিখছি, যেগুলো হয়তো আমরা জানতাম, বাট কখনো যে এত ইজি ইমপ্লাই করে যে এটা জানতাম না। And Chef Mendes, how much time are they getting? Little chefs, half an hour, আধ ঘন্টা, খুব বেশি না, খুব কমও না কিন্তু, okay? And your time starts now. The first thing I realized was my peeler wasn't sharp enough. Chef Rajiv, উনি নিজে he was walking towards me and সে আমাকে তার নিজের personal peeler দিয়ে help করছে. So it's gonna be a memory. এটা আমার মনে থাকবে always. শেফ রাজবি আজকে যখন আমাদেরকে একটা ডিশ বানাতে দিলেন, তো সেই ডিশটার নাম ছিল ফিশ ফিঙ্গার অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ ফ্রাই উইথ ফ্রেঞ্চ ফ্রাই রেডি। না, সে ভালো শুধু সময় কম আছে, তো একটু স্পিডটা বাড়াতে হবে।
এটাতে আমি আগে ফার্স্টে ব্ল্যান্ড করছিলাম, তো এটা ইউজ করে ফেলছি। তো এটা কি তুমি কি একটা শ্যালো ফ্রাইং এফেক্ট আনতে চাচ্ছ নাকি ডিপ ফ্রাইং ডিপ এফেক্ট? ফ্রাই, ডিপ ফ্রাই। আমার ফিশ ফিলেগুলো কাটতে প্রবলেম হচ্ছিল, আমার ফিঙ্গারের সাইজে কাটতে পারছিলাম না। চিপসগুলো কাটতেও একটু বড় সাইজের হয়ে গিয়েছে, একটু টেনশানে ছিলাম যে কি হবে। রান্নার সময় আমি প্যান্ট্রি থেকে সব ইনগ্রেডিয়েন্টসই আনতে পেরেছিলাম এবং রান্নার সময় খুব এক্সাইটমেন্ট কাজ করতেছিল এবং আমি ভালোভাবে এটা রান্না করতে পেরেছি। মেক শিওর টেবিল যেন ক্লিন থাকে সবার। লাস্ট মিনিট। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and hands up. ওকে, লাস্ট ফিনিশিং এ গার্নিশিং এ ছিল। এবারে তোমরা একে একে তোমাদের ডিশ সামনে নিয়ে আসবে এবং শেফদের কাছে প্রেজেন্ট করবে। আমি যার নাম নিব সে প্রথমে সামনে আসবে। প্রথমেই আসছে শারিকা তাসনিম। Potatoes were not peeled properly and it's not cut into the equal, you know. The fish is tasty, but you should cut in a equal size. Try to cut at least, you know, something similar. Yeah, your sauce is good. শেফ মন্দেশ যে কথাটা বললেন আমি একই কথা বলবো, তোমার ফিশে সুন্দর ফ্লেভার আছে, দেখে খুব ভালো লাগছে না। Otherwise, I think the tartar sauce is good, rightly balanced, and visual presentation আরো সুন্দর হতো। আসিফ আহমেদ নাবিল। আমি আমার ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলোকে চুলায় দিয়ে আমি টাটা সস বানাচ্ছি, তো তখন হঠাৎ করে আমি আমার ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের দিকে তাকাই এবং দেখি যে আমার ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা পুরো বার্ন হয়ে গেছে। তো আমার কাছে টাইমও ছিল না যে আমি নেক্সট আবার বানিয়ে সেটা সার্ভ করব। তো সেই বার্ন হওয়া ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলোকে আমি শেফদের সামনে সার্ভ করলাম। I think your French fries is not up to the standard, you know. You agree? Okay. And your sauce, you add too much for the quantity of mayonnaise. All right. And the fish taste is good, but you have to be much more presentable. The size and the presentation. Okay. That fish is rightly cooked, very nice crunch by the side, with it perfectly cooked. But your tartar sauce has become too acidic to complement the fish fingers. So ওখানে একটু ব্যালেন্সটা রাখলে আরো ভালো হতো। Otherwise, good job. ইশফাক ভুইয়া সেজান। টাটা সস নাইস, বাট তোমার ফ্রেঞ্চ ফ্রাই যেটা হচ্ছে সেম সমস্যা, আলুগুলো সমানভাবে কাটা হয়। To keep just one, I think enough, because it's not the main course. It's a
dissect the latest gadgets to see what makes them tick. From the newest iPhones to the latest smart home gadgets, we take it apart to find out just how much tech is packed into every device. Search for Cracking Open at cnet.com so you don't miss the latest tech teardowns. Satu, I was talking to Kelly yesterday. He was saying that a couple of weeks ago you were just having, well, there were second thoughts or just reconsidering the decision a little bit, and you hadn't signed with an agent yet at that time. Can you just take me through just the thought process you were having at the time, and why ultimately you chose to stuck with your decision? Was professionalism and an upcoming shoe deal and the prospect of being in Dallas, where obviously you are now and Jalen is, how much did that just weigh into this decision-making process? I was really unsure about everything. I feel like the whole world was like that. You know, I didn't know what should be my next step, if it's the right decision to go pro or not due to all the circumstances. I mean, we still don't know if there will be a WNBA season, so it was kind of risky. But on the other hand, I also thought that I was ready to leave, and this is part of being a professional. And if it's during these times and these uncertainties, I will experience them now as a professional. Hate chargebacks? Tired of PayPal reserves? Yeah, me too. Being an e-com is already hard enough, especially if you're busy scaling. And these are the last problems us marketers want to deal with. Well guys, I'm about to share with you an app that's gonna save you so much time, money, and headaches. It's called UpTrack, and it's the ultimate lifesaver. UpTrack syncs all your PayPal orders from Shopify with its exact tracking number, so you never have to worry about risking your accounts. Best of all, it's 15 times cheaper than the other tracking apps out there. Why keep spending money on unreliable VAs to manually upload your tracking numbers, or worse, doing it yourself? UpTrack automatically syncs orders every 20 minutes. Just set it and forget it. This is a no-brainer, guys. I use it on my stores and it works great. So if you're looking to stay on PayPal's good side, then make the smart move and use UpTrack in your business. Satu, I was talking to Kelly yesterday. He was saying that a couple of weeks ago you were just having, well, there were second thoughts or just reconsidering the decision a little bit, and you hadn't signed with an agent yet at that time. The thought process you were having at the time, and why ultimately you chose to stuck with your decision, was professionalism and an upcoming shoe deal and the prospect of being in Dallas, where obviously you are now and Jalen is. How much did that just weigh into this decision-making process? I was really unsure about everything. I feel like the whole world was like that. You know, I didn't know what should be my next step, if it's the right decision to go pro or not due to all the circumstances. I mean, we still don't know if there will be a WNBA season, so it was kind of risky. But on the other hand, I also thought that I was ready to leave, and this is part of being a professional. And if it's during these times and these uncertainties, I will experience them now as a professional. So I still feel ready to take the challenge and accept it as it is. But I also know, you know, working out and staying in shape, the same things that I would do as I would be in college. But I had the luxury of, you know, having an alternative decision of returning back to college, and I didn't take it because ultimately I'm just ready for a new step and a new challenge. So it hasn't changed too much in terms of my attitude towards readiness. Okay, next, Sam. We're gonna make our own homemade peeps so we know exactly what goes into them.
We're actually changing the molecular structure of the sugar. Pop it in the oven for about 10 minutes at 250 degrees and it's ready to use. Peeps are just the beginning. Yeah. We can do flowers, we can do bunnies. Because of COVID-19 in mid-March. Gary, how the NBA draft prospects? In every way imaginable. Under normal circumstances right now, players would be working out daily with other prospects. Obviously, that's not happening. You would be, having workouts with NBA franchises. You would be preparing for an NBA combine. None of those things are happening right now. You can't even do virtual workouts for NBA teams. All you can do right now is talk to them for a total of 4 hours before the draft, no more than 2 hours in a week. Beyond that, we don't even know when the draft is going to be. It is scheduled for June 25th, but nobody I've talked to over the past few weeks believes that it's actually going to happen on June 25th. And why? It seems pretty obvious. You can't have a draft until you have a draft order. You can't have a draft order until you officially pull the plug on an NBA season, and Adam Silver is not prepared to do that or even make a decision about when he might do that at this point. So this is an incredible amount of uncertainty, and I think you could reasonably argue, if not emphatically argue, no NBA prospects have ever gone through anything close to this. You really are running around blind right now as it relates to your professional basketball future. Training at this point, we know that without a doubt, GP hits the nail on the head in terms of the draft date. No one knows when it's going to be moved, but the expectation is that it is going to be inevitable, that it is going to move, because the NBA will try and kick that can down the road in terms of its season as long as it's feasible to do so. In terms of how the draft is being prepped for, spoke with a few scouts this week, and these scouts who work for general managers, it is completely different. You go through the rhythms of a season not knowing that this was going to happen. You are banking on interviews, not just the combine, your individual workouts with franchises, sit downs with the players. Now you are relying on your evaluation personnel, hopefully getting interviews here or there, but you're even limited to that, which is the right move for the NBA overall. And then you are taking your best guess as to who you think you can add to your franchise and make an immediate impact, still not knowing, okay, if and when there'll be a resumption of the regular season this season, and if that happens and it's delayed, how it impacts the next season with the NBA and all the roster things that go into there. It is a fascinating storyline that I don't think we're going to have more clarity on, particularly for the next 2 or 3 weeks, as we all wait to see when happens and what can happen with the draft. Focusing back on college basketball, let's look ahead to next season. The Hawkeyes are the most popular bet to win the 2021 based on percent of cash wagered and tickets. Gary, are you agreeing? We dissect the latest gadgets to see what makes them tick. From the newest iPhones to the latest smart home gadgets, we take it apart to find out just how much tech is packed into every device. Search for Cracking Open at CNET.com so you don't miss the latest tech teardowns. I wouldn't go that route, but I don't think it's idiotic. I mean, Iowa is going to be a preseason top. Garza, the presumptuous preseason National Player of the Year, returns to college, and everybody I've talked to thinks that he will. He has declared for the draft to go through the process in whatever form, but everybody I've talked to believes he will be back in college. Preseason National Player of the Year, and the star for an Iowa team that's got a shot to win the national title. But if you look at the current odds, to me, the best value is probably Houston at plus 3,000. I've got Houston right now projected. Mr. Gold Sunflower Oil. Mrs. சொல்றதை கேளுங்க, Mr. Goldக்கு மாறுங்க. ஈரோடு, காஞ்சிபுரம், கும்பகோணம், பொன்னேரி உள்ளிட்ட அனைத்து வேலம்மாள் போதி கேம்பஸ்களிலும் அட்மிஷன் நடைபெற உள்ளது. வேலம்மாள் போதி கேம்பஸ். Expected to return, then the Zags should be preseason number 1. I agree, GP, and I'm gonna pump up GP's way too early off-season top 25-1 version 9.0 already. By the way, we're in mid-April. Just to note, remind viewers here, I will cheat real quick. He's got Gonzaga 1, Baylor 2, Nova 3, Virginia 4, and Houston 5.
I'm surprised we actually don't have more money coming in on Gonzaga and Baylor in particular. The two teams Pear says has the top of his rankings. I'd agree with Gonzaga at 1. I don't think there's any argument against it the way that it's. We're talking about a Bulldogs team that would have been a 1 seed, had the best offense in college basketball last season, and we've already seen what they can do year over year over year. So I don't disagree with the money or the momentum toward Iowa with getting Luka Garza back, but to me, it's like how is the general public, again, if it keeps what it has, whenever we start the next season, Gonzaga should rightfully be the preseason #1 team in college basketball. All right, so let's get a little crazy. Matt, get us started. Who are you picking to win the 2021 NCAA tournament? Yeah, this will be a little crazy. I'm going to, okay, so I'm going to say if it keeps what it has, whenever we start the next season, Gonzaga should rightfully be the preseason #1 team in college basketball. All right, so let's get a little crazy. Matt, get us started. Who are you picking to win the 2020? My best combination of this will be a value and teams that I actually think can do it is going to be the Villanova Wildcats. And I say that even without thinking that Sadiq Bey is going to be on the roster. Whenever we start the next season, Gonzaga should rightfully be the preseason #1 whenever the NBA draft is held. All right, so let's get a little crazy. Matt, get us started. Who are you picking to win the 2020? Before in terms of losing quality players, bringing back a majority of its roster. My best combination of this high-ranked preseason and winning national champion do it. It's what it's going to be the Villanova Wildcats. And I say that while not as distinctly remembered as this season, Gonzaga should rightfully be the preseason championship whenever the NBA draft is held. All right, so let's get a little crazy. Matt, get us started. Who are you picking to win the 2020? In terms of losing quality players, but I do like back a majority of its roster. I think the combination of this high-ranked preseason and winning national champion do it. It's what it's going to be the Villanova Wildcats. I say that they're not not as a card pick, if you will, but I'm most confident right now that I'd pick them to win it all. All right, Matt, going with Villanova. Gary, you mentioned liking Houston. Is that who you think will take the title? Well, I like Houston at that plus 3,000 to win the NCAA tournament in 2021. But if I'm just picking a champion, I'll go with the team that's preseason #1 in the top 25 and 1, and that is Mark Few's Gonzaga Bulldogs. Now, this is reliant on Filip Petrusev returning to college for another season. He is not announced to do that yet, but as long as he does, he is a first-team preseason All-American. He is surrounded by other realistic NBA prospects, and then the Zags are enrolling a 5-star guard, McDonald's All-American, and Jalen Suggs, who is one of the most talented players who will ever have stepped onto that campus. And so Mark Few, he's had some incredible teams over the past couple of decades, one that played for the national championship, but from a pure talent perspective, this might be the best team he's ever had. See being preseason #1 and staying there maybe the entire season. Certainly looking forward to a next season. We appreciate the time, guys. Thank you so much. And if you want more from Matt and Gary, if you haven't already, make sure to subscribe and download to the Eye on College Basketball podcast. Coming up, we head to UFC. Our combat. Chatting with you. Great to see you again. North Carolina freshman Cole Anthony announced he is entering the NBA draft. Anthony's only season at UNC didn't really go as planned. He partially tore his right meniscus in December, undergoing surgery, forcing him to miss 11 games. Tar Heels finished the year under 500. In his announcement, Anthony called his time in Chapel Hill an opportunity of a lifetime. Well, to get his perspective on the potential lottery picks decision, we welcome in our Tim Doyle, basketball analyst. Come for the knowledge, stay for the stories, because you're always in for something. Thanks, Tim. Cole Anthony is heading to the NBA draft. What do you think about his decision, and what can we expect from an NBA team to get when they get Cole Anthony? Yeah, as far as his decision, I think it was an easy one. I'll say it, it's a down draft. So Cole Anthony is going to be a lottery pick. And Sheree, you know, when you know you're going to be a lottery pick, you have to turn pro. Now, what type of pro is he going to be? Well, if I knew that, I wouldn't be sitting here with you. I'd be running an organization somewhere, because we're talking about a teenager who, if I had to grade
his 1 year at North Carolina, incomplete because there was so much hype about him going down to Chapel Hill. His first game against Notre Dame, 34 points. They win, and then all of a sudden, they lose some games they're not supposed to. All of a sudden, Roy Williams calls this his least gifted team he's ever coached. Then Cole Anthony gets hurt. And then North Carolina's in last place in the ACC. And you had to think at that point, Cole Anthony was thinking, well, this season's gone. This ship be sinking. And I'm about to turn pro. He's an excellent rebounder. He's got tremendous range. He can create his own shot. But he never had 9 or 10 assists in any game at the college level. Now, you're going to blame that on his teammates? Maybe so. But I still think he's going to end up being a top 10 pick. As far as the decision, I think it was an easy one. It's crazy to think that college basketball season ended a little over a month ago, but regardless, it was bananas, the regular season, different stars emerging throughout the year. Tim, who are you projecting to be top 5 picks in this year's NBA draft? Yeah. Tim, who are you projecting to be top 5 picks in this year's NBA draft? Yeah, this year's draft's all about upside. And let's be honest, it's about upside every single year. So we're going to look at guys that are 19 and 20 years old. And I think the first overall pick is going to be Anthony Edwards out of Georgia. Georgia wasn't even going to be a tournament team, but Edwards is a guy who's a legit 6'5", 6'6", can get his shot at any time, averaging 20 points a game as a freshman at Georgia. আমি সঠিক ভাইয়া আমাদের সামনে আই হোপ তোমরা যখন লিটল শেফ হয়ে যাবে তারপর আমি তোমাদের ওদিকে পার্ট নেব আর আমি তো ওদেরকে ট্রেন করছি তারপরে তো ওদের জীবন বদলায় গেল কিচেনে কাজ করার আগে সবচেয়ে ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট হচ্ছে তোমরা হাত ধুবে which is very essential পরবর্তী রাউন্ডে কিন্তু তোমরা সবাই যেতে পারছো না The Little Chefের গ্র্যান্ড কিচেনে তোমরা যাচ্ছ গ্র্যান্ড কিচেনে আমরা নিয়ে যাচ্ছি টপ 20 লিটল শেফ ছড়াও জাদু তেষ্টা জুড়ে dear little chef দেখিয়ে দেয়ার এই তো সময় থাকবো না ঘরে সেফ ছড়াও জাদু তেষ্টা জুড়ে dear little chef dear little chef Gotta give the old man credit. It's a high-level kid. Melo's journey was unusual, but now he owns part of the franchise. He's actually been really good. I would not be surprised if LaMelo Ball goes #1. LaMelo Ball's really kind of like snuck up on folks that he was overseas for a while, but I think as for Papa Ball, I think maybe that ship has also sailed one tip home. You didn't have Cole Anthony listed there in your top 5. Where do you see a best fit for him? You know, I see Washington, which is going to be in the top 10, possibly as a replacement for John Wall down the line. And Johnny Wall, when healthy, has been really good, but he's going to be coming off a massive injury, and a guy like Cole Anthony. The Little Chefের গ্র্যান্ড কিচেন থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাবিলা এবং আমি আমার সঙ্গে এখন এই মুহূর্তে গ্র্যান্ড কিচেনে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের 2 জাজেসকে শেফ তারেক এবং শেফ মুবারক আমাদের সঙ্গে আছে বেস্ট অফ দ্য বেস্ট টপ 20 লিটল শেফ যাদের মাঝ থেকে আমরা পেয়ে যাব দ্য আলটিমেট লিটল শেফ জানিয়ে রাখি যে সেকেন্ড রানার আপ কি পাচ্ছে সেকেন্ড রানার আপ পাচ্ছে 1 লক্ষ টাকার পুরস্কার ফার্স্ট রানার আপ পাচ্ছে 2 লক্ষ টাকার পুরস্কার এবং দি আলটিমেট 3 লিটল শেফ পাচ্ছে 5 লক্ষ টাকার পুরস্কার সো লিটল শেফস আজকে কিন্তু অগ্নি পরীক্ষা তোমরা রেডি প্রস্তুত আমার সামনে যে 20 জন লিটল শেফ দাঁড়িয়ে আছে তোমরা কিন্তু সবাই খুবই খুবই ভালো সো এই কারণে কিন্তু এবার যে কম্পিটিশন হবে এটা হবে অনেক অনেক বেশি হার্ড প্রস্তুত তোমরা সবাই আমাদেরকে প্রথম রাউন্ডে অ্যামেজিং পারফরম্যান্স করে দেখিয়েছো
এবং যেভাবে শেফ তারিক বললো যে এখন কম্পিটিশনের টাফনেসটা আরও বাড়বে, তো পুট ইউর বেস্ট ফুট ফরওয়ার্ড। আমরা যে কথাগুলি বলেছিলাম প্রথম রাউন্ডে ওই কথাগুলোকে মনে করিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে গাইস। ওয়েল ইয়েস, উইশেস তো পেয়ে গেছো, অল দ্য ভেরি বেস্ট। অল দ্য ভেরি বেস্ট এই জন্য আমি বলছি বিকজ আজকেও কিন্তু এলিমিনেশন থাকছে, অলরাইট? সো সেটা মাথায় রাখতে হবে সিন্স ইট ইজ আ কম্পিটিশন। তো এখন আমি সেই তীর লিটল শেফের সিজন 1 এর রানার আপ আব্দুল্লাহ এবং সেই সঙ্গে দ্য আলটিমেট তীর লিটল শেফ অফ সিজন 1 জয়কে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। বাহ, জুই এবং আব্দুল্লাহ কেমন আছো তোমরা? অনেক ভালো। খুব ভালো আছি আপু। বেশ ভালো লাগছে। তোমাদেরকে দেখে কেমন লাগছে এখানে এসে? আবারও অনেক ভালো লাগছে, কারণ একটা সময় ছিলাম আমরা তোমাদের জায়গায় ছিলাম, এখন তোমাদের পালা। তো সবাইকে অল দ্য বেস্ট। তীর লিটল শেফ সিজন 1 এর ফার্স্ট এপিসোড থেকে একদম গ্র্যান্ড ফিনালে পর্যন্ত প্রত্যেকের সাথে খুবই সুন্দর একটা মুহূর্ত কাটিয়েছিলাম। যখনই আমাদেরকে বলা হয়েছিল আমি এবং জুই একটা এপিসোডে আসবো, যে নিউ কন্টেস্টেন্ট থাকবে তাদেরকে আমরা ডেমো করে দেখাবো, তখন মানে জিনিসটা বেশি মিস করেছি সেটা হচ্ছে KFC কিচেন। আর সেই কিচেনে দেখতে পাচ্ছ তোমরা আব্দুল্লাহ এবং জুই আমাদের সঙ্গে এখানে আছে। আজকে আমাদের রাউন্ডটি হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স வெள்ளி காலை 10 மணிக்கு பெரிய இடத்து பெண் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 10 மணிக்கு புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் நடித்த சூப்பர் ஹிட் திரைப்படங்களை உங்கள் ஜெயா டிவிக்கு கண்டு மகிழுங்கள்। করছে তোমরা দেখবে এবং পরবর্তীতে তোমরা সেটা প্রিপেয়ার করবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? জুই তুমি কি ডিশ তৈরি করছো? আমি আজকে তৈরি করছি চিকেন লাজুন ইনফিউশন সস। இதன் 37 நியூட்ரியன்ஸ் வளர்ச்சி மற்றும் இம்யூனிட்டி அதிகரிக்க உதவுகிறது. எனவே இன்ஃபெக்ஷன் வாய்ப்பு குறைவு, வளர்ச்சி 50% அதிகம்। Pediasure. Alright. Hello friends. So competition শুরু হবে, তোমরা রেসিপি শুনে ফেলেছো। சமூக இடைவெளி একটা বিষয় এখানে জানিয়ে রাখছি, তোমরা খেয়াল করো যে তোমাদের জন্য அதுக்கும் மேல உங்க வீட்டை கிருமிகள் கிட்ட இருந்து பாதுகாக்க வீட்டை தூய்மையா வச்சிருங்க। ஆனா এই প্যানিক বাটনটা কি আমি শেফ মুবারক আপনাকে বলবো যে এক্সপ্লেইন করার জন্য। சமையலறை তো এই বাটনটা তোমরা তোমাদের জন্য একটা লাইফলাইন উலக சுகாதார மையம் এই বাটনটা তোমরা যে কোনো সময় যদি তোমাদের সাহায্য প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে এই বাটনটা প্রেস করতে পারো এবং আমি বা শেফ তারিক তোমাদের এগিয়ে যাব তোমাদেরকে সাহায্য করব। இஷான் சமாளிச்சிடுவான்। কিন্তু அம்மா வரதுக்குள்ள டெட்டால் போட்டு குளிக்கலாம்। டெட்டால் பழக்கம் தருது 100 வகையான நோய்களை பரப்பும் கிருமிகளிடமிருந்து பாதுகாப்பு। நல்லாவே சுத்தம் பண்ணிட்டே இஷான்। என்னையும் கிருமிகளையும் ஏன் வீட்டில் டெட்டால் சுத்தம்। இப்போது நீங்க பெறலாம் இன்னும் 33% அதிக பாதுகாப்பு। চাইলেই সব সময় ব্যবহার করা যাবে না। ওকে, তাহলে আমি আব্দুল্লাহ তোমাকে রিকোয়েস্ট করব তোমার রেসিপিটি তাদেরকে ডেমনস্ট্রেশন করে দেখানোর জন্য। மற்ற কুড়ন্ডিகளை போன்று இல்லாமல் ஆனந்த் வரும் 5 கிலோ மட்டுமே হ্যালো, இப்போது প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ভালো না থাকতে পারে। একটু নার্ভাস তোমরা? விட்டால் ஆனந்த் போன்ற কুড়ন্ডিகளை নার্ভাস হওয়ার কোনো দরকার নেই। আজকে আমি তোমাদের খুবই ইজি পদ্ধতিতে একটা রেসিপি তৈরি করে দেখাবো। সেটা হচ্ছে প্যান ফ্রাইড ফিশ উইথ স্যালাড। তো ফার্স্টলি আমাদের যেটা লাগবে, আজকে রেসিপিটার মেইন ইনগ্রেডিয়েন্টস সেটা হচ্ছে ফিশ। আমি এখানে ফিশ স্লাইস নিয়েছি। আমি তোমাদের ফিশটা কাটটা দেখিয়ে দিচ্ছি। স্ট্যান্ডার্ড সাইজ, বেশি মোটা না, বেশি পাতলা না। তো আমরা এটা এখন সিজনিং করব। মাদম রুবাই আমি এখানে ভেটকি মাছ যেটা আছে ওটা ইউজ করছি। তোমরা যখন বাসায় ট্রাই করবা তোমাদের পছন্দের ফিশ অ্যাড করতে পারো। দিয়ে দিচ্ছি আমি সল্ট। தயவு செய்து 9870259259 என்ற எண்ணை இப்போது அழைத்து மாதம் ரூபாய் 500 மட்டும் செலுத்தி ஒரு குழந்தையின் வாழ்வை காப்பாற்றுங்கள்। இதுதான் உன்னோட ரூம் அத்தை, டாய்லெட் இதோ இருக்குல்ல। এরপর আমি অ্যাড করছি ফিশ সস। আমি டாய்லெட் சுத்தமாக மட்டும் இல்ல, தூய்மையாகவே சுழற்றினாலே போதும்। டிடர்ஜென்ட்டை காட்டிலும் ஹார்பிக் கரைகள் மற்றும் கிருமிகளை அடியோடு அழித்துவிடும்। இப்ப சுத்தமாயிடுச்சுல, அதுவும் வெறும் 37 ரூபாயில்। লেমন দিয়ে দিচ্ছি। வேர்வையால் ஏற்படும் துர்நாற்றத்திற்கு காரணம் கிருமிகளாகவும் இருக்கலாம். அதனால டெட்டால்கோ இது தருகிறது துர்நாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் கிருமிகளிடமிருந்து 100% சிறந்த பாதுகாப்பு மற்றும் மென்தால் வைக்கிறது ஃப்ரெஷ்ஷாக। என் வீட்டில் டெட்டால் சுத்தம்। ஹாப்பி ஆனிவர்சரி। இன்னைக்கு டின்னரை நான் சமைக்கிறேன். ஆபீஸ்ல இருந்து வரும்போது சாமான வாங்கிட்டு வரேன். அரௌண்ட் 1 tablespoon of olive oil. வயதாக ஆக சக்தி குறைவது இயற்கை। That's it. আমি আর কোনো ingredients add করব না। আমি এটাকে শ্যালো ফ্রাই করব, নট ডিপ ফ্রাই। মাসলস শক্তিயை মেম্বারতে উদবো। খুব অল্প পরিমাণে তেল অ্যাড করব। Regain strength within তো আমরা তেলটা একটু গরম হতে সময় দেব।
சத்தியமா நிலாவை பார்க்கும்போது எனக்கு உங்க ஞாபகம் வராது. আমরা একটা একটা அந்த நிலாவை என் கண்ணுக்கு நீங்களா 3 தெரிவிங்க. minutes করে এটাকে রান্না করে নেব। நினைச்சது கிடைக்கலன்னா கிடைச்சது நினைக்கிறேன். Right? That's my perfect. মামা இன்னொரு மாமா இங்க। என்ன மாமா? அதுவும் கூட இருப்பாங்களே। আমার fish almost done, so আমি করেছি। এরপর আমি গার্নিশিং এর জন্য একটা স্যালাড ইউজ করব। 3টা ভেজিটেবল, গ্রিন ক্যাপসিকাম, அஜித் மாளவிகா நடித்த உன்னை தேடி நாளை பிற்பகல் 1:30 மணிக்கு உங்கள் ஜெயா டிவியில் பவர்ட் பை பெர்ஃபெக்ட் 99 ஹேண்ட் சானிடைசருடன் இணைந்திருப்போம். இருந்து விலகி இருப்போம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் தூரி போறோம். சம்மர்ல பவர் கட் வந்தாலும் இனி நிம்மதியா தூங்கலாம். சௌபாகியா ரீசார்ஜபிள் ஃபேன் அசோசியேட் ஸ்பான்சர் அனில் ஆட்டா அண்ட் சக்கி ஆட்டால வகை டிஷ்ஷஸ் பண்ணலாம். வாழ்வில் வண்ணங்கள் நிறையட்டும். ஜென்சன் அண்ட் நிக்கல்சன் பெயிண்ட்ஸ். நெஞ்சில தைரியம் இருக்கு, வேகமா இருக்கு. நம்ம படத்தி ஹீரோ black pepper, உடல் மண்ணுக்கு உயிர் தமிழுக்கு இதை உறக்க சொல்வோம் உலக உங்க தமிழ் দিব என் நடிப்பு உங்க சொல்வீச்சும் என் வாழ்வீச்சும் சேர்ந்தா எப்படி இருக்கும்? olive oil দিচ্ছি আমি 2 டேபிள் ஸ்பூன்। நீ மட்டும் அரசியலுக்கு வந்த என்ன சாப்பிட்டுடுவேன். மோகன்லால் ஐஸ்வர்யா ராய் நடித்த இருவர் நாளை மாலை 6 மணிக்கு உங்கள் ஜெயா டிவியில் পவர்ড পার্ট ইউজ করব। লাইক একটা ভেজিটেবল দিব, হচ্ছে টমেটো, ഹൈദറിന്റെ പഴയ ചരിത്രം അറിഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഈടെ ബന്ധം കൂടാൻ വരുവാ? എന്റെ ഉമ്മ ഹമീദൊക്കെ പെണ്ണൊന്നല്ലല്ലോ, ഓരോ നിക്കാഹ് എങ്ങനെയെങ്കിലും നടന്നോളൂ, നിങ്ങൾ ബേജാറാവണ്ട. എന്നാലും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഹമീദ് എവിടെ? മയ്യത്തെടുക്കണ്ടേ സമയത്തിനായിന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കി. ഹമീദേ, നീ വിളന്നിരിക്ക, മയ്യത്തെടുക്കണ്ടേ? പള്ളിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ എത്തി പോയില്ലേ ഹംസക്ക? വാ മോനെ, എനിക്ക് ആരുള്ള ഹംസക്ക? ഹംസക്ക, നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുക. ഞാൻ ഇവനെ വിളിക്കുന്നു, നീ വിളിച്ചു പോരും.
ഹമീദേ അല്ല നമ്മളെ നീരാൻ അവിടെ പോയി എനിക്കറിയില്ല മോനെ ഹമീദേ നീ വിഷമിക്കാണ്ടിരി ബാപ്പ പറയല്ലേ മരണം ഒരു യാത്രയാണെന്ന് എല്ലാരും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് മരിച്ചവരെ യാത്രയാക്കാനാ അല്ല നമ്മളെ നീരാൻ അവിടെ പോയി എനിക്കറിയില്ല മോനെ ഹമീദേ നീ വിഷമിക്കാണ്ടിരി ബാപ്പ പറയല്ലേ മരണം ഒരു യാത്രയാണെന്ന് എല്ലാ